हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? So let's crack GATE in ESE or any competitive examination with India's largest online live learning platform, Unacademy. By taking Unacademy's Plus or Iconic subscription, you will get a live recorded and live and recorded courses from India's best educators. About me, this is all about me. My name is Mohammad Ehtisham Siddiqui. My referral code is ES001. I'm an alumni of JMI New Delhi. I am 4 times GATE qualified, 3.5 years of teaching experience. Taught more than 10,000 students all over the India. Recently guided few students who secured AIR rank 1 in different examinations. So what I teach: geotechnical engineering, water resource engineering, environmental engineering, structure analysis, surveying, construction planning and management are the subjects which I used to teach on Unacademy. By taking the Unacademy's Plus subscription, you will get an access to the best of Unacademy, daily live classes, live tests and quizzes, unlimited access to the recorded classes and structured courses. By taking the Unacademy's iconic subscription, personal coach, study tracker, study materials, question answer practice of mains, and you will get all the benefits of Plus. These are the top educators with the help of which you can learn over the Unacademy. This is all about Unacademy's Plus plan. This is all about Unacademy's Plus plan. This 1 month plan, 3 months plan, 6 months plan, 1 year plan, 18 months plan, 24 months plan. So by taking these plans, you can get access to the live and recorded classes, but you don't have to pay this fees. Just you have to enter my code ES001. You will get a 10% discount, instant discount. This is all about Plus subscription. They are available in 2 packages, 1 year and 2 year. The fees for 1 year is 50,000. Fees for second 2 year is 74,000 rupees. You don't have to pay this fees. Just use my code ES001. You will get a 10% discount instantly. Okay. So this is all about if your student or if your friend or if your relative preparing for any competitive examination. This code is valid for all the competitive examination. Just use the code and get the subscription. And for any queries, you can join my group, that is Civil by Siddiqui sir. Okay, the most important PYQs for engineering services examination, it's state services examination SSC. Now we are discussing about the most important PYQs for engineering services examination, state services examination and SSC J. So the first question on your screen, just tell me the answer of this first question. This is the first question. Just tell me the answer of this first question, my dear students. संतोष यादव, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड इवनिंग चल रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट इवनिंग. Just tell me the answer of this question. So just answer it, anyone. The downhill creep is the main cause of which of the type of soil formation? What happens? Suppose this is the soil, this is the rock, and if the soil get deposited on the rock, then it is called as residual soil. So this is basically the residual soil, but because of certain creeping actions, because of the temperature variations, because of the seepage actions, there the creeping will occur in this soil. The creeping action will occur in this soil, and under the action of gravity, this soil tends to move and come downward. This soil tends to move and come downward, and such type of soil which moves under the action of gravity, such type of soil is none other than called as collovial soil. इस तरीके की soils को क्या बोलते हैं? Such types of soils are called as collovial soil. So moving forward to the next question, solve next question. Try to solve the next question, my dear students. Try to solve the next question, my dear students. All the students will answer this question. Okay, just read this question. Just read it question. A compacted specimen of volume 196.35 centimeter cube is prepared from a dry soil. If the required water content and percentage air voids in the specimen are 15% and 20%, then the weight of water required for the preparation of this sample.
So how you determine the weight of water required? So initially the sample is made from the dry soil. So it means that the weight of water added, if I talk about the weight of water added, if I talk about the weight of water added, if I talk about the weight of water added, it will be equal to final, it will be equal to final weight of water minus initial weight of water. But since the soil is dry, because the specimen is prepared from a dry soil, it is given that there is a compacted specimen which is prepared from a dry soil. It means that the initial water content is zero. If the initial water content is zero, it means there is no water in the soil. So all you need to do that the weight of water added is equal to the final weight of water, and final weight of water can be written as final water content multiplied by the weight of solids available in 196.35 centimeter cube. The weight of solids which are available in 196.35 centimeter cube. So what he is saying that from this dry soil, if the required water content is 15%, that is final water content is 15%, and in that specimen the amount of percentage air voids is 20%, then what is the weight of water required? So first you just think about it. If I want to know the weight of water added, I should know that I know the final water content, I should know the weight of solids which are available in a volume of 196.35 centimeter cube. And the weight of solids can only be obtained from the dry unit weight. So as you know that the dry unit weight with respect to the percentage air voids is equal to 1 minus Na into Gs gamma W divided by 1 plus Wf multiplied by Gs is equal to weight of solids divided by volume of soil. You got it, the point? What I'm trying to say, you understanding this point? What I'm trying to say? Okay. So by using the gamma D, I can determine the weight of solids available in 196.35 centimeter cube. So by using Na is given as the soil should have 20% air voids. So it will become 0.8 multiplied by Gs given as 2.69 multiplied by gamma W is given at 9.81 kilonewton per meter cube divided by 1 plus the amount of final water content is 0.15 multiplied by Gs is equal to 2.69 is equal to weight of solids, and in what volume? In a volume of 196.5 into 10 to the power minus 6 meter cube. 10 to the power minus 6 meter cube. On multiplying it, you will get the weight of solids. All you need to find the weight of solids. So how you calculate it? Just calculate it fastly. That how much will be the weight of solids? How much will be the weight of solids? Calculated nicely. 0.80 multiplied by 2.69 multiplied by 9.81, and it will get divided by 1 plus 0.15 2.69. So it comes out to be 15. When you multiply this 15 by 196.35 and divided by 1000 and again divide by 1000, so it is coming out to be the weight of solids coming out to be 2.9534 is the weight of the solids. So if I talk about the weight of water added, that would be equal to 0.15 multiplied by the weight of solids, that is 2.9534. When you multiply it with 0.15, then you will get an answer of around 0.443 newtons. But answer is given in grams, so you will convert into the mass, that is equal to weight divided by G. 0.443 divided by G. The answer will in kg, so I will convert it into gram. So the answer would come out to be multiplied by 1000 divided by 9.81. So the answer comes out to be 45.15 grams. So around 45.15 grams
of water when added to a volume of 196.35 dry sample, then you can able to prepare a soil having a water content of 15% and having a percentage air voids of 20%. So the correct answer of this question would be B. The correct answer of this question would be B. I hope you understand the question. I hope you understand the clarity of the question. Okay, I hope you understand the clarity of question which we have discussed. If you have any doubt, a minor doubt if you have, then you just ask me. My dear students, if you have a very small doubt, a pin drop doubt you have, then you can ask me very frankly you can ask me. Okay, my dear students, moving forward to the third question. Answer it, question number 3. All the students are requested to participate in the question, because when you participate in the questions, then you're able to get a clarity of the concepts. So if many toppers, if you listen the interviews of many toppers, then many toppers used to study less, but they used to give the test more, because by giving the test, they will analyze that whatever they have studied, whether that matter or whether those concepts, whether that content is more than sufficient for your preparation or not. Sometimes what happens, we have studied a lot of things about a topic, but when we go for the test, what we see that we are unable to answer the questions of the test. This is only the reason because we didn't study that content which is exam oriented. So always study the exam oriented content. When you study the exam oriented content, then only you will be successful in your life, then only you will crack. Suppose you're preparing for GATE examinations, or you're preparing for engineering services ethics examination and an engineering ethics examination, and now you're studying the ethics of civil services. So you are doing hard work. No matter you are studying for 12 to 14 hours. But the most important thing, that the ethics which you are studying is not much related to the engineering ethics. So you have to know that what content you should study for any examination preparation. कोई सब्जेक्ट यस ओके. तो मतलब आर यू मिस्टर फॉरगेट? Okay, so I will be starting because many students, I was not dealing the theoretical subject just because many students have the examination. Now all the examination will get finished. Now the focus of the student will be engineering services examination. So I will be covering a subject on this YouTube channel, most probably either the fluid mechanics or the soil mechanics. Either I will cover the fluid mechanics, or I will cover the soil mechanics, or maybe I will cover the strength of material also. So most probably three subjects will be starting from the first week of the April, and it will goes and try to complete it in that month only. Okay, so theory subjects will start. Don't worry, my dear students. I will start the theory subjects also. Okay, so moving to this question, just tell the answer of this question. Always study that content which is beneficial for examination. A fully saturated clay has a water content of 40% and a mass specific gravity of 1.85. After oven drying, the mass specific gravity reduces to 1.75. The specific gravity of solids is. Okay, Anand Kumar, when will be your earthquake engineering UPPCL paper? When will be your earthquake engineering UPPCL paper? आनंद कुमार कमेंट करके बताइए कब आपका यूपीपीएससीएल का पेपर है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अर्थक्वेक का भी प्लान करेंगे. मैंने प्रॉमिस किया था कि यूपीपीएससीएल के लिए मैं आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोई प्री रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है आपको, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा. आप जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप देखिएगा बेटा. तो इसीलिए बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप मुझे एक बार डेट बता दीजिए कब आपका एग्जामिनेशन है. चलिए, fully saturated clay has a water content of 40%. So the saturated water content is given as 40%, and the mass specific gravity of this saturated soil, is given as 1.85. So the mass specific gravity can be written as gamma Z divided by gamma W. Now, after oven drying, the mass specific gravity will becomes
1.75. It means that the mass specific gravity of dry soil will be equal to gamma D divided by gamma W. And you need to find the specific gravity of solids. In order to find the specific gravity of solids, what you need to do? Firstly, what you have to do, that the water content is 40% and GM, saturated unit weight, is this. By using this formula, because this water is saturated, sorry, the soil is saturated, you can determine the void ratio. You can determine the void ratio as SE is equal to W into GS. So as the soil is saturated, so the void ratio at saturated water content comes out to be 0.4 times of GS. So you determine the void ratio at saturated state is equal to 0.4 times of GS. So from here you can write from here gamma saturated is equal to 1.85 multiplied by gamma W is equal to GS plus E divided by 1 plus E got multiplied by gamma W. I hope you understand it. Gamma W will be cancelled by gamma W. Mr. Fogget is saying, sir, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है. कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? दिनेश पांडे, थैंक यू सो मच दिनेश पांडे. कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप दिनेश पांडे, रीजनिंग एक्सपर्ट सर? कैसे हैं आप? मिस्टर अनफॉरगेट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फुल्ली सैचुरेटेड क्ले है जिसका सैचुरेटेड वाटर कंटेंट 40% है. फिर बोल रहा है उसकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.85 है. आफ्टर ओवन ड्राइंग उसकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.7. तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. तो अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर. कहने का मतलब यह है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि आपको इनडायरेक्टली उस सॉइल का यूनिट वेट दे रखा है. तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1.85 इज इक्वल टू जीएस, और ई की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है? 0.4 टाइम्स ऑफ जीएस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4 टाइम्स ऑफ जीएस. तो ये हो गया आपका 1.4 टाइम्स ऑफ जीएस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4 टाइम्स ऑफ जीएस. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो आप इसको इधर ले जा सकते हैं. 1 प्लस 0.4 टाइम्स ऑफ जीएस डिवाइडेड would be equal to 1.4 divided by 1.85. When you solve, then determine the value of GS. 1 by GS plus 0.4 is equal to 1.4 divided by 1.85. तो फटाफट से सॉल्व करिए बेटा. इसे सॉल्व करते हैं. 1.4 divided by 1.85 minus 0.40 and 1 divided by 0.356. So the specific gravity GS coming out to be 2.80. तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 2.80. समझ आया क्या? समझ आया क्या? कुछ बताना है क्या? बताइए जरा. Did you understand the concept? Did you understand the concept? समझ आ गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए बेटा.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा ध्यान से. Just read the next question, my dear students. The weight of a specimen immediately after the removal of sample read the my students, read the question, my dear students. The weight of the specimen immediately after the removal of sample was 35.50 gram, and the same specimen after oven drying weight is equal to 20.20 gram. The volume of the sampler before drying was found by immersing in the mercury to be 25 centimeter cube. If the specific gravity of solids is 2.70, what are the values of water content, void ratio, degree of saturation, bulk density, dry unit weight? So what he is trying to say that the weight of a specimen immediately after removal from the sampler. So I can say that the initial or the natural weight of the sample W is given as 35.20 gram. That is equal to 35.20 gram. And the same specimen after oven drying is 20.20 gram. It means the weight of solids or weight of the soil is equal to 20.20 gram, is equal to 20.20 gram. The volume of the sample before drying was found by immersing in the mercury. So it means that the initial volume of the soil was found to be 25 centimeter cube when the soil is in the natural state. If the specific gravity of the solids are 2.75, so it is given that the 2.70 is the specific gravity of solids, then you determine the weight water content. So weight of the soil, so my dear students, the weight of the soil is given. So if I want to calculate the water content is equal to weight of water divided by weight of solids. And the weight of water can be defined as weight of soil minus weight of solids divided by weight of solids. So the weight of soil is 35.20 minus weight of solids is 20.20 divided by weight of solids is 20.20. On solving it, the water content comes out to be. Tell me, my dear students, what is the value of water content which is coming? Tell me, my dear students, water content comes out with 30.20 minus 20.20 divided by 20.20. So it comes out to be 74 point. It is coming out to be 74.25%. The value of water content is coming out to be 74.25%. Okay. Now you determine the void ratio. So void ratio, as we have already discussed, the void ratio is equal to volume of void divided by volume of solids. But you need to find the volume of voids, or you can also just use one formula. You know that by using the unit weight of soil, you can determine the gamma D. So as you know that the gamma D is equal to weight of the dry soil divided by volume of soil. So weight of the soil is 20.20 divided by volume is 25 is equal to my dear friends, one second my dear student, there is some network issue.
Okay, chalo solve back. Coming back to there was some network issues, and I was unable to open the video. So Madhu Maurya is saying that the gamma d can be written as GS gamma W divided by 1 plus C, and solving it, you will find the void ratio is coming out to be 0.808. Just confirm it whether this is the value of void ratio or not. Whether this is the 2.70 multiplied by 25 divided by 20.20. Okay, and this is the volume 25, 2.70 divided by 20.20. Okay, minus 1. So void ratio is coming out to be, my dear students, the void ratio is coming out to be 0.808. Just confirm it whether this is right or wrong. So void ratio coming out to be 0.808. Okay, great. Now you determine the void ratio, water content, degree of saturation. Okay, you know the water content, you know the void ratio. You can use the formula. Simply SE is equal to W into GS. So you will determine the degree of saturation as 0.7425, GS 2.70 divided by void ratio is equal to 0.808. So on solving this, the degree of saturation comes out to be, 0.7425, 2.70 divided by 0.808. So the value of degree of saturation you can calculate this degree of saturation. What is the value of degree of saturation coming out to be? This value is coming out to be very high. I think you have calculated the wrong void ratio. Did you calculate the wrong void ratio? My dear students? Maybe you have calculated the wrong void ratio. Just you need to find the void ratio and a correct void ratio. What will the void ratio? Weight of solids divided by the volume of soil. Do one thing, calculate it nicely, because maybe the soil is at super saturated state. At this water content, the soil may be super saturated state. So you can't use the volume at the natural state, at the dry state. So you can't use it. So but you can use that the gamma T, bulk unit weight, is equal to weight of soil divided by volume of soil. Weight of soil is 35.20 and the volume of soil is 25. So just tell me the bulk unit weight. Bulk unit weight is 35.20 divided by 25. So bulk unit weight comes out to be 1.408 gram per cc. Now by using bulk unit weight, you can determine gamma D is equal to gamma T divided by 1 plus water content. And here the gamma D is equal to 1.408 divided by 1 plus water content is 0.7425. So 1 divided by 1.7425, it comes out to be gamma D 1.408 divided by gamma dry की value आ रही है आपकी. You are saying the gamma dry comes out to be, which is coming out to be very less, even less than water. I don't know, maybe there's some mistake in this question. The weight of the specimen is given 35 and the volume is given as 25. So
water content, water content is absolutely right. Weight of the soil is absolutely right. There may be some error in this question because the gamma d, the unit weight of soil, is coming out to be less than the unit weight of water. How it can be possible? This can't be possible that the unit weight of the soil comes out to be unit weight of water. As of now, I'm skipping this question because I will check this question. I think there may be some doubt. There may be some sort of I think there may be some sort of mistake or misprinting in this question. So I am, as of now, skipping this question, moving forward to the next question. Just solve the next question. चलो द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे बच्चे. After remolding a dense soil, the volume of voids gets disturbed without any change in the water content. If AC and Na represents the air content and percentage air voids of the dense soil respectively, then the percentage air voids of the remolded soil is given by. Remolded soil का आपको क्या बताना? तो देखिए जरा, कह रहा है कि आपकी एक डेंस सॉइल थी जो अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में थी. सपोज दिस इज अ डेंस सॉइल, इट इज इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, एंड अब आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब वो आपकी रिमोल्डेड स्टेट में चली गई. वो किस में चली गई? आपकी रिमोल्डेड स्टेट में चली गई. तो आपसे क्या बोल रहा है? ध्यान सुनिएगा. आपसे बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स गेट डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन द वाटर कंटेंट. अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में भी वाटर कंटेंट क्या था? W था. यहां पर भी वाटर कंटेंट क्या है? W है. बट द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स गेट डबल्ड विदाउट चेंज इन द वाटर कंटेंट. तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स थे, अगर बेटा इस स्टेट में 1 थे, दैट इज कॉल्ड एज अनडिस्टर्ब्ड स्टेट. तो बेटा रिमोल्डेड स्टेट में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं वो डबल हो गए, दैट इज VV1 हो गए. बहुत बढ़िया. If the AC and Na represents the air content and percentage air voids of dense soil, है ना, आपको यहां पर वैल्यू दे रखी है डेंस सॉइल की, दैट इज इन, ये आपको AC दे रखी है, या आपको Na दे रखा है. देन द परसेंटेज एयर voids of remolded sample, आपको परसेंटेज एयर voids of remolded sample, दैट इज Na डैश, इसकी वैल्यू बताना इन द फॉर्म ऑफ Na AC, इनकी फॉर्म में आपको वैल्यू बताना है. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे अप्रोच करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? डेंस सॉइल है, डिस्टर्ब हो गई है, इसमें जो वॉइड्स का जो वॉल्यूम है वो इसका डबल है, दोनों में वाटर कंटेंट आपका सेम है. द वाटर कंटेंट इज सेम, यस और नो? तो जब वाटर कंटेंट सेम है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट सेम है, तो इसका मतलब जो भी चेंज आया होगा वॉइड्स में, वो ऑब्वियस सी बात है आपका किसकी वजह से आया होगा? एयर और वाटर कंटेंट की वजह से आया होगा. तो आप, अगर आप निकालना चाहते हैं बेटा क्या, अगर आप इसका परसेंटेज एयर वॉइड्स निकालना चाहते हैं, नई सॉइल जो है उसका परसेंटेज एयर वॉइड्स निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रिमोल्डेड स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द रिमोल्डेड स्टेट. यही तो लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द रिमोल्डेड स्टेट. वेरी गुड. अब नाउ व्हाट विल डू, जस्ट लिसन इट. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द रिमोल्डेड स्टेट माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिमोल्डेड स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ voids in the second state. I can write like this, yes or no? I can write like this. Now what we'll do, as it is given that the VV2 is equal to 2 times of this and the water content is also remaining same. Okay, very good. Now what we'll do, if the water content is same, then the weight of water in the first stage
divided by weight of solids is equal to weight of water in second stage divided by solids. yes or no? तो मैं based upon this मैं लिख सकता हूं weight of water in the water content in the undisturbed state, that is W1, will be is equal to W dash. yes or no? And weight of water content is equal to weight of water in the undisturbed scale divided by weight of solids is equal to weight of water इन द रिमोल्टेड स्टेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड. तो यहां से ये क्या कर देंगे, हम यहां से इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. अब वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर को लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट अनडिस्टर्ब्ड स्टेट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द डिस्टर्ब्ड स्टेट. इसको कैंसिल. तो यहां से मैं कह सकता हूं जितना पानी का वॉल्यूम पहली स्टेज में है उतना पानी का वॉल्यूम जो है सेकंड स्टेज में तो होना भी चाहिए, क्योंकि बेटा वाटर कंटेंट चेंज हुआ नहीं है. समझ पा रहे हैं क्या? अब जब वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका सेम हो गया तो आप सुनो जरा मेरी बात ध्यान से. मुझे कन्वर्ट करना है, ये जो फॉर्मूला इक्वेशन लिखी है इसको मुझे बेटा कन्वर्ट करना है किसमें, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एसी में और एनए में. अब मुझे पता है एसी क्या होता है. अगर मैं एसी की बात करूं तो एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. यस, तो एयर कंटेंट होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. वेरी गुड. तो अब मैं यहां पे लिखूं, यहां पर अगर मैं लिखूं, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां पर देखूं कि दोनों का अगर इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ता हूं, मैं पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको पकड़ता हूं. यहां पर मैं लिखता हूं एन ए डैश इज इक्वल टू यहां से अगर मैं ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ सेकंड के वाइड से डिवाइड कर दूं तो वॉल्यूम ऑफ वाइड एट सेकंड स्टेज माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड एट सेकंड स्टेज एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड एट सेकंड स्टेज. ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं. डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा वन माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय, यहां डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा वन प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एट सेकंड स्टेज. ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब सुनो जरा, अगर आप यहां से देखेंगे तो दिस बिकम्स द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन द सेकंड स्टेज. दिस बिकम्स द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन द सेकंड स्टेज. तो इसको लिख सकता हूं मैं वन माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन द रिमोल्टेड स्टेट इज डिवाइडेड बाय वन प्लस डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये बन जाएगा वन अपॉन वॉइड रेशियो इन द सेकंड स्टेज. लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब रिमोल्टेड स्टेट में लिख सकते हैं. यस और नो, बहुत बढ़िया. अब सुनो जरा ध्यान से, अब ध्यान सुनो, अगर मैं यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन पहली स्टेज का निकालूं तो पहली स्टेज का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एट फर्स्ट स्टेज. और दूसरे का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर. इधर दिखता नहीं होगा आपको, इधर आपको दिखता नहीं होगा. अगर मैं पहली स्टेज का डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिखूं यहां पर, अगर मैं बेटा यहां पर पहली स्टेज का डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिखूं एज डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और दूसरे का लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एट द सेकंड स्टेज. ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेरी गुड, बताइए. ऐसा लिख सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एट फर्स्ट स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और दूसरे का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सेकंड स्टेज. तो ऐसा लिख सकते हैं हम, वेरी गुड. अब आपको ये बात पता है कि दोनों चीजें बराबर हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट फर्स्ट स्टेज इज इक्वल टू, तो आप क्या लिख सकते हैं S1 इंटू V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स 1 इज इक्वल टू S2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एट सेकंड स्टेज. और आपको ये बात भी पता है बेटा कि जो पहले दूसरे के अंदर जो वाइड्स है वो पहले के दुगने हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि S1 इंटू VV1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VV1 मल्टीप्लाइड बाई S2. यस और नो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेकंड स्टेज का मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेज का डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको मैंने एक सेकंड रुकिए, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको सेकंड स्टेज का मिल जाएगा
वो आपको किसके बराबर मिल जाएगा, द सेकेंड स्टेज डिग्री ऑफ सेचुरेशन S2 इज इक्वल टू S डैश इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ 0.5 टाइम्स ऑफ S1. Yes, we can write like this. We can write like this. Yes or no? अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज आपको ऊपर वैल्यू पुट करके इसको तो आप कन्वर्ट कर लेंगे एसी में पहले वाले में, लेकिन अब आपको वॉइड रेशियो को भी चेंज करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइड रेशियो को भी चेंज करना पड़ेगा. यस और नो, यू नीड टू चेंज द वॉइड रेशियो. अब वॉइड रेशियो कैसे चेंज करें, सेकेंड स्टेज के वॉइड रेशियो को कैसे चेंज करें. S1 इसको इक्वेशन 1 मानकर अगर इसमें आप पुट करें वैल्यू तो इसमें तो चेंज कर देंगे. इसमें आ जाएगा आपका एन ए डैश, इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी एन ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एस डैश की वैल्यू कितनी रख देंगे, दैट इज इक्वल टू एस डैश इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ S1. ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0. डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेकेंड स्टेज का आपको वॉइड रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस. विद रिस्पेक्ट टू दिस अब वो कैसे निकालें, मेन चीज क्या है वो कैसे निकालें. अब आपका वॉइड रेशियो जो होता है वो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है ना, और दोनों स्टेज में आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होंगे, सेम होंगे. रिमॉल्डेड और डिस्टर्ब्ड स्टेज में दोनों स्टेज में आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होंगे, आपके सेम होंगे. इसको मैंने वॉइड रेशियो मान लिया ई डैश. अब सुनो, एज आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एट फर्स्ट स्टेज दैट इज अनडिस्टर्ब्ड स्टेज इज इक्वल टू दिस. ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऐसा लिख सकते हैं. बहुत बढ़िया. अब आप एक बात बताओ, आप क्या लिखेंगे, वॉइड रेशियो अगर मैं पहली स्टेज का लिखूंगा तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ऑफ फर्स्ट स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. और मैं दूसरी स्टेज का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. तो दोनों जगह सॉलिड्स तो आपके क्या है, सेम है. तो मैं पहली स्टेज, ये पहली स्टेज के सॉलिड है, दूसरी स्टेज के सॉलिड है, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू अगर लिखूं तो नीचे वाली इक्वेशन को यूज करके तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एट फर्स्ट स्टेज डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एट सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय E2. और आपको पता है ये 2 टाइम्स है, तो यहां से आप जब रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा VV1 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VV1 डिवाइडेड बाय E2. इससे कैंसिल हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E1. E2 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ E1, और E2 को ही हमने E डैश लिया था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ S1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ E1. यस और नो, इतना लिख सकते हैं. वेरी गुड. यस और नो, E1 की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया. एक्सीलेंट. अब हमने E1 की फॉर्म में चेंज कर लिया. हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो Na होता है, Na इज इक्वल टू, Na होता है N इंटू AC. यस और नो, हमें ये बात पता है. अगर हम यहां से देखें, जरा ध्यान से देखें, अगर हम यहां से देखें, मैंने इसकी वैल्यू को, जो कहां गई वैल्यू, मैंने इसकी वैल्यू को ऐसा रख दिया. बहुत बढ़िया. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, तो हमने कन्वर्ट कर लिया. अब हम इसको पोरोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसको पोरोसिटी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एस डैश को क्या लिख सकता हूं, एस डैश को लिख सकता हूं 1 माइनस एस डैश नहीं बचा बेटा, ये तो दूसरी वाली इक्वेशन है. आगे बढ़ते हैं, यहां पर चलिए. तो यहां पर मैं S1 को क्या लिख सकता हूं, S1 को लिखता हूं 1 माइनस 0.5 और 1 माइनस AC, ये लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ E1, क्या लिख सकते हैं. तो जब इसको अंदर लेकर जाएंगे तो अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंदर वैल्यू आ जाएगी Na डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ AC. तो इसको तो मैंने AC में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी नीचे जो वॉइड रेशियो उसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है. तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 0.5 तो यही था, और बेटा इसको क्या लिख सकता हूं, E1 को लिख सकता हूं बेटा n अपॉन 1 माइनस n. ऐसे लिख दिया मैंने, n अपॉन 1 माइनस n, कोई दिक्कत नहीं है. एलसीएम ले लेते हैं एक बार, तो यहां से Na डैश की वैल्यू आ जाएगी 0.5, 1 प्लस AC डिवाइडेड बाई n प्लस 0.5 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ n. ऐसा लिख सकते हैं. बहुत बढ़िया. तो यहां से ही वैल्यू हो गई 0.5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस AC डिवाइडेड बाई
यहां से ये वैल्यू इसमें से माइनस करोगे, ये हो गया 0.5 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ n। तो ये Na ये हो गया Na डैश इज इक्वल टू 0.5 1 प्लस AC डिवाइडेड बाई 0.5 1 माइनस n। तो इससे कट गया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो Na चाहिए। मुझे क्या चाहिए? Na चाहिए, ठीक है। और आपको पता है बेटा, आपको पता है Na इज इक्वल टू n इंटू AC होता है। तो यहां से n की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? Na अपॉन AC। ये तो कट गया, तो 1 प्लस AC तो ऐसे ही था, डिवाइडेड बाई 1 माइनस n क्या होता है? Na अपॉन Na क्या होता है? Na अपॉन AC। ये लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां से Na डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Na डैश विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू Na डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला देखो पहले ऑप्शंस किस फॉर्म में दे रखे हैं। Na ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Na अपॉन AC। तो आपका जो आंसर दे रखा है AC माइनस, ओके ओके, यहां गड़बड़ हुई है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां हम देखेंगे तो यहां पर n में से 0.5n माइनस करेंगे तो प्लस में 0.5n बचेगा, तो ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस। ये वैल्यू तो आपकी प्लस हो गई, ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी। तो Na की वैल्यू होती है Na इज इक्वल टू n इंटू AC। तो यहां से आप रख देंगे बेटा किसकी वैल्यू? n की वैल्यू रख देंगे Na अपॉन AC। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच करेगा आपका तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस AC इंटू Na डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई Na प्लस AC, डिवाइडेड बाई Na प्लस AC। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका C।